Hello everyone. So my channel Clear Your Doubt is going to help you in your preparation journey. If you are a NEET-UG student, you can ask your doubt questions from physics only. If you are a JEE mains or advanced student, you can ask questions from physics and mathematics both. And by sending the questions, pictures of the question or question to my Telegram channel through the link given in the description. Okay. So let's do this question. This is based on hydraulic press. Let me just explain what hydraulic press is. So with hydraulic press is based on Pascal's law, right? Pascal's law. So what Pascal's law states? So pressure at every point in the fluid is same at the same level. Okay. So if it is the datum and you are saying you are at height h, so at every point at height h, pressure is going to be same. Similarly, this is also height h, pressure here is going to be same. All right. So hydraulic press, what does it do? एक लार्ज वेट आप रख दो इस पे, इस पिस्टन पे, और एक स्मॉल वेट रख दो यहाँ पे, तो ये स्मॉल प्लेट इट इज गोइंग टू लिफ्ट दिस लार्ज प्लेट. ठीक है. हाउ? आई विल शो यू. Okay, through this question. So let me just do this question. A hydraulic press can lift 100 kg when a mass small m is placed on a smaller piston. So 100 kg lift कर रहा है, ठीक है, by small mass m. ठीक है. तो यहाँ पे डाउनवर्ड पे इसका वेट लगेगा mg, यहाँ पे डाउनवर्ड पे इसका वेट लगेगा 100g. ओके. बाय द वे दिस इज नॉट m डॉट, एक वाइब्रेशन का मत समझ लेना आप लोग. ठीक है. तो प्रेशर बैलेंस कर देते हैं. अगर यहाँ पे 1.1 मान लो, यहाँ पे 1.2 मान लो, दिस इज योर 2 पॉइंट एंड दिस इज योर 1 पॉइंट. ठीक है. तो P1 इज इक्वल टू P2. वी आर एट द सेम लेवल. दिस इज द डेटम, दिस इज द डेटम, राइट. सो P1 इज इक्वल टू P2. P1 क्या हो जाएगा? वेट पर यूनिट एरिया. सो 100 इंटू जी अपॉन एरिया A1 इज इक्वल टू mg अपॉन A2. लेट्स कॉल इट इक्वेशन 1. And in second case, question is saying that how much weight you can lift. Okay, let me call it W dash. If you increase the area A1, okay, A1 is this area, A2 is this area. Okay, if you increase your area A1 to 4 times, okay, and m सेम रख रहे हो आप, स्मॉल मास ही कितना ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाएगा अगर हम A1 को 4 टाइम्स कर दें, लार्जर एरिया को 4 टाइम्स कर दें और स्मॉलर एरिया को 4 टाइम्स रिड्यूस कर दें, तो A2 बाई 4. दिस इज योर इक्वेशन 2. 1 और 2 की हेल्प से हमें W डैश निकालना है. ऑलराइट. सो लेट्स जस्ट डू दिस क्वेश्चन. सो W डैश वुड बी हाउ मच? 4A1 इंटू mg upon A2, 4 mg upon A2. 4 will go in the numerator. So what you got? 16A1 to mg upon A2, right? यहाँ से इक्वेशन 1 से आप mg इंटू A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100g. Am I right? Yes. So W dash आपका आ जाएगा 16 इंटू 100g. That means 1600g. दिस इज वेट. आपके ऑप्शन में क्या दिया है? मास. हालांकि पूछा है उसने वेट ऑप्शन में, क्योंकि केजी में दिया है तो आपका मास m डैश आ जाएगा 1600g by g. So 1600 kg. Alright. So thank you so much for watching the video. Do subscribe to my channel and clear your doubt. Have a great learning. All the best. Thank you so much.